A very good evening to all of you. From today onwards, we are resuming with the vocab section. And the word that I have taken for today is DOTE. The meaning of DOTE is love and affection. यानी कि किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार या सम्मान होना. अब हम इस वर्ड को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डॉट को वोट के साथ रिलेट कर रहा हूं. वोट क्यों? पहला रीजन है कि डॉट एंड वोट आर बोथ द राइमिंग वर्ड्स, मतलब सिमिलर प्रोनाउंसिएशन. सेकंड इज कि थ्रू वोट आई कैन इजीली रीच टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. कैसे? जब आप पॉलिटिकल पार्टी या जब हमारे देश में इलेक्शंस होता है, यू गो एंड कास्ट योर वोट, राइट? तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को जब वोट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच, एक थोड़ा सा प्यार उनके प्रति, इसलिए आप शायद उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं. 1% 2% जो भी प्यार आपका उस पार्टी के तरफ है, राइट? सो थ्रू दिस व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू रिलेट डॉट विथ वोट एंड देन वोट विथ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट? आई एम श्योर दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू यू that how easily we can learn the meaning of this word. Now another important thing is how we can use it in the sentence. So this is the way they had a special dot for their younger daughter. मतलब younger daughter की तरफ उनका ज़्यादा प्यार था, right? So this is what this sentence means. I hope you like the technique and the way the word has been used in the sentence. If yes, please don't forget to subscribe to the YouTube channel, and please like, and also don't forget to give your valuable inputs. Thank you so much. See you tomorrow with a new word. Thank you.